Avinash sir, very good afternoon. Great pleasure being online, sir, after a very long time. Good afternoon, sir. Fabulous to see you, sir, and I can see a changed look also in you, sir. It goes to show that we have not got online together in a reasonable long time, sir. That's right. It has been Welcome, some sir. time. Welcome. It's always a pleasure and honor to be connected with you, and your activities and the manner in which you have been doing and upholding this 360-degree feedback is commendable, sir. So that is where AICT and Smart Cookies lies. Welcome, Avinash, sir. Thank We you, have sir. Thank Rakesh you. Khatri, sir. Rakesh Khatri, sir, welcome. Good afternoon to you, sir. Hey, welcome. Great to see such an energetic voice coming out. Welcome, Rakesh Khatri, and Niveta, welcome. Good evening, sir. Good evening to you, and my team, quite obviously, is very much part of this thing. Me and Priyanka are very much connected. Ladies and gentlemen, a warm welcome to each one of you. When you people have come forward for looking after this 360-degree feedback implementation and activities, the purpose is singular. The purpose is, after carrying out sufficient activities towards capability enhancement and capacity building of our respective faculty members, it becomes but obvious that a faculty members is answerable to the system towards improving the overall quality of technical education. We have this wonderful initiative of 360-degree feedback mechanism. Trust me, it has been made in-house by Avinash sir, and AICT is just about kind of reaping the benefits for the hard work done by Avinash sir and his team. Why do we do this program on a regular basis? The program is being done on a regular basis because of a single reason, that we want you people to use it for your own benefit. There are multiple reasons that why you people should use it. Number one, it has become mandatory. It is part of your approval process. That is number one to start. Number two, and very important, AICT's financial funding henceforth is going to be related and connected with 360-degree feedback. And number three, I don't think so that we need to be speaking. It is on the public domain in AICT's Gazette notification of 1st March 2019. It is already existing. So for all the institutes, all the faculty members who are connected today, in case you are having a feedback system and mechanism in-house, which fulfills the requirements as given in the Gazette notification, please go ahead and use it. We don't have any objections. In case you don't have, and you are now trying to make a new one, why spend your time? Why spend your money? Why spend your resources? Please utilize this platform. It has been made. So we are in a cycle of sensitization of 360-degree feedback. I think this must be the third or fourth cycle of sensitization. And I could not have spoken in that much more words in which I have emphasized the importance of this. Let this be an activity which benefits you people. Let this be an activity which makes you people that much more comfortable. I think somebody wants me to speak in Hindi. देखो, ये प्रोग्राम जो हम करते हैं, ये प्रोग्राम का सिंगल एक ही मकसद होता है, और वो होता है कि टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना। आप लोग पढ़ाई कराते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन दे रहे हैं। जो भी टीचर एजुकेशन देता है, वो टीचर भी जवाबदार होता है सिस्टम में। उसको भी सिस्टम का भाग बनाने के लिए ये प्रोग्राम बना है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट कनेक्टेड है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा जब आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। Khatri, I will request you, when you would be speaking, make sure that you use a mix and match of English and Hindi. Definitely, sir, I will do that. Because I get to understand that there are certain Hindi speaking people who have got connected.
But notwithstanding, it's been a pleasure coming back and introducing and getting back and meeting and interacting with you people. I would now leave the complete functionary aspects to take this initiative forward with Avinash sir. Avinash sir, all yours, and apology to Aditi Sinha. Sorry, Aditi, I could not welcome you in today's forum, but it's never too late. So welcome once again for today's activity. And Avinash sir, platform is all yours. Thank you very much, sir. So, namaskar. I think last year हम 3 बार राजस्थान में प्रेजेंटेशन कर चुके हैं, और इस साल के लिए जब हम शुरुआत कर रहे थे तो हमने देखा कि लास्ट ईयर आउट ऑफ 320 कॉलेजेस 65 कॉलेजेस ने अपने अपने कॉलेज के अकाउंट एक्टिवेट किए थे। कॉलेज एक्टिवेशन की प्रोसेस बड़ी सिंपल है। जब वो लॉगिन करते हैं अपने कॉलेज का जो ईमेल आईडी यूज़ करके AICTE के पोर्टल में लॉगिन करते हैं, उसके अप्रूवल प्रोसेस में जाते हैं, वही ईमेल यूज़ करके यू कैन स्टार्ट 360 डिग्री फीडबैक। अब 65 लोगों ने एक्टिवेट तो किए थे कॉलेजेस, पर डेटा सिर्फ 1500 स्टूडेंट का आया। ये तो जाहिर है कि राजस्थान में 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट है। तो हम सोच रहे हैं कि भाई इतना कम डेटा क्यों आया, तो कुछ कारण होंगे, तो कुछ क्या समस्या है वो समझना हम चाहते हैं। तो इसलिए इस बार की जो मीटिंग हमने पहले प्लान की है, तो इसने हमने रिक्वेस्ट की कि सब कॉलेज के जो कोऑर्डिनेटर्स है, डिसीजन मेकर्स है, उनको पहले इनवाइट किया जाए। सेंसिटाइज तो मेरे ख्याल से सब हो गए, हर किसी को पता है कि ये GR है 2019 में पब्लिश हुआ है और ये मैंडेटरी है। जैसे कर्नल साहब ने कहा अभी कि इसके बिना AICTE का फंडिंग नहीं मिलेगा। ओके, अप्रूवल हैंडबुक पे इसको मैंडेटरी कहा गया है, तो शायद अप्रूवल के प्रोसेस में भी ये आपकी सुविधा कर सकता है। तो राकेश सर आपको ये प्रोसेस बताएंगे कि क्या है। आप में से कितने लोगों ने पहले अटेंड किया था मुझे याद नहीं है, क्योंकि हर किसी के नाम सिर्फ यहाँ दिख रहे हैं, कॉलेज के नाम नहीं दिख रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं भी किया था वो भी समझ ले, और प्लीज आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर के लिए। इसके अलावा और भी फोरम है। हम हर रोज सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखते हैं, और निवेथा जो इस कॉल पर है वो और उसकी टीम पूरे ये सेशन अटेंड करती है, और किसी भी कॉलेज को कोई भी समस्या है तो उसके लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। और तो राकेश सर पहले प्रोसेस समझा देंगे, उसके बाद मैं फिर से आपको कुछ हमारी जो कल्पनाएं हैं, आइडियाज है कि जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। हमने लास्ट ईयर में बहुत कुछ सीखा कि किन कॉलेजेस को सुविधा का की अवेलेबिलिटी थी। जैसे कॉलेज के सारी जो स्टैंडर्ड टेबल्स होते हैं, डिपार्टमेंट लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट। अब सब्जेक्ट लिस्ट कॉलेज जो DT के अंडर होता है वो DT के सब्जेक्ट लिस्ट यूज करता है, जो यूनिवर्सिटी के अंडर होता है वो यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट लिस्ट यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए ये सोच के हमने इस बार वही राजस्थान से लास्ट ईयर भी शुरू किया था। इनफैक्ट 2019 में जब पुनिया सर ने अनाउंसमेंट किया था सिटी का, वो भी जयपुर में किया था। सो राजस्थान ऑलवेज हैड ए लीडिंग पोजीशन इन दिस एफर्ट फॉर द होल कंट्री। तो उसमें लेकिन इस साल हम चाहते हैं कि DT के साथ और यूनिवर्सिटी के साथ काम करके स्टैंडर्ड टेबल लिस्ट बना के कॉलेज का काम आसान कर देंगे। तो राकेश सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 360 का एक जनरल प्रेजेंटेशन है वो कर दीजिए, और ये भी पूछ लीजिए कितने लोग पहली बार आ रहे हैं, कितने लोग दूसरी बार आ रहे हैं, सो दैट यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। थैंक यू राकेश सर। मैं बीच बीच में पोल कंडक्ट करता रहूंगा। वेलकम एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू यू एवरीबॉडी। मेरा पहला पोल क्वेश्चन आपके सबकी के स्क्रीन पे आ रहा है। हम ये फटाफट करेंगे, एक एक डेढ़ मिनट में करेंगे। मैं पहला पोल आपके स्क्रीन पे अभी आया है।
whether this is your first session, second session, third session or fourth session. मुझे पता करना है कि आप ये पहली बार आए हैं, दूसरी बार आ रहे हो, आप कितने बार आ चुके हो इसके पहले. हम ये सब फटाफट फटाफट एक एक 1.5 मिनट में कर लेंगे ये. We will complete this in quickly 1.5 minutes each of our 3-4 questions I will ask quickly. So it looks like a lot of you are for the first time. आप बहुत से आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए हैं. आई वेलकम यू एवरीबॉडी. एक 30 सेकंड और रुकते हैं बाकी जिन्होंने नहीं दिया है आंसर. रिक्वेस्ट एवरीबॉडी से रिक्वेस्ट है कि आप आंसर कीजिए इसको. रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी दैट प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस. If it is 4 or more, also do mention 4 or more. Responses के लिए धन्यवाद. So out of the 185, 118 people are for the first time. 8 are attending for the second time. Only 1 is coming for the third time. One more question coming quickly. Who you are on this workshop? आपका रोल क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में आपका रोल क्या है? क्विकली अगर आप मल्टीपल रोल्स हैं तो आप मल्टीपल टिक मार्क भी कर सकते हो. आप डीटी के रिप्रेजेंटेटिव आर यू रिप्रेजेंटिंग डीटी? आप यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप वीसी प्रिंसिपल डायरेक्टर हो, आप डीन हो, आप एआईसीटी के कोऑर्डिनेटर हो. Okay, whether you're a teacher, you're a student. If you're an AICT coordinator, mention that you are an AICT coordinator. Anybody from DT also can request you to put that you are from DT. If you are a university representative, request you to put yourself as a university representative. Responses के लिए धन्यवाद. So we have 6 VC director principals, 11 AICT coordinators, 66 teachers, and 45 students. One last question before I begin the presentation. What type of college your college is? What type of your institute is? If your institute is multiple categories, that is engineering, polytechnic, pharmacy, do mention that. Just a quick response. This is the last and final question. आखिरी प्रश्न है before we begin to the presentation.
Responses के लिए धन्यवाद. Thank you for your responses. We see a lot of polytechnic colleges today. 73 polytechnic colleges, 35 engineering colleges, 11 management colleges, 1 architecture, 11 MBA, 1 MTech, and 1 others. Those who have ticked on the other, I request you to put in the chat as to what did we miss out. I will begin with my presentation. मैं अपना presentation शुरू करता हूं. Today we are going to talk about AICT 360-degree feedback capture and reporting system for every faculty in the institute. So what is this? These are some stats. What this stats we already spoken about. The total of the 320 colleges, 65 have activated so far. We are going to take 2 parts to today's presentation. How do we go ahead and implement the 360-degree feedback? And what is there beyond 360-degree feedback? हम दो पार्ट प्रेजेंटेशन में करेंगे. एक पहला कि 360 इंप्लीमेंट में करने में क्या लगता है, एंड 360 के बाद क्या है, या 360 के अलावा और क्या है. The steps involved in 360, you will go about activating your institute, configuring the institute standards, uploading the students, validating the teachers, inviting students and teachers, and getting the feedback. Process is very simple. I will explain you everything. For all those who are coming for the first time, what is 360-degree feedback? AICT for the first time introduced this concept of 360-degree feedback for overall measurement of the teacher. And whom does this apply to? This applies to all universities, institutes that are imparting technical education or courses that are approved by AICT. So for this, in March 2019, a Gazette notification was introduced. And a copy of the Gazette notification is available on AICT's website and Government of India's website. Our team will put up this link for your reference. You can go ahead and read this Gazette and copy. AICT ने 1 मार्च 2019 को एक गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा ये सुनिश्चित किया कि ऑल कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस जो AICT के कोर्स दे रहे हैं, उनको ये 360 डिग्री फीडबैक एप्लीकेबल होगा. उनको ये 360 डिग्री फीडबैक देना है. तो AICT 360 डिग्री फीडबैक या 360 डिग्री फीडबैक कैलकुलेट कैसे होता है, इसके 100 मार्क कैसे कैलकुलेट होते हैं. इसमें देयर इज टीचिंग प्रोसेस. दिस इज सेल्फ रिपोर्टेड बाय द टीचर. टीचर खुद रिपोर्ट करती है उसका टीचिंग प्रोसेस के बारे में, यानी उसने क्या किया है टीचिंग के लिए. इसके लिए 25 मार्क्स होते हैं. There is 10 points for contribution to society. This also is self-reported by the teacher. The next 20 points are reported by the head of the department. Departmental activities, these are reported by head of department. The next 2 activities, the institute level activities and ACR, these both are reported by the principal. Institute activities for 10 points, ACR for 10 points. ACR is your annual confidentiality report. We do not participate in the calculation process, but we only take the final score. And last but not the least, there are 25 marks for students' feedback. So this way, right now, the teacher is evaluated by the teacher himself or herself. The HOD
the principal and the students. Later on, other entities will also come in, but right now, these are the entities that will come as evaluation. All this put together comes to 100 marks. इसमें टीचिंग प्रोसेस है जो टीचर खुद कहती है कि हमने ये किया है इस सब्जेक्ट के लिए, तो उसे 25 मार्क है. कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी के लिए 10 मार्क है. टीचर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो उसके लिए डिपार्टमेंटल लेवल एक्टिविटीज देता है उसके लिए 20 मार्क है. इंस्टीट्यूट लेवल एक्टिविटीज प्रिंसिपल डिफाइन करता है 10 मार्क के लिए. आपका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का 10 मार्क होता है और स्टूडेंट फीडबैक का 25 मार्क होता है. ये सारा मिला के 100 मार्क होता है. ये सारे चीज होने के बाद आपका ये रिपोर्ट, ऐसा रिपोर्ट तैयार होता है. टीचिंग प्रोसेस, सेमेस्टर वाइज, कोर्स कोड, कोर्स नेम के हिसाब से आपके कितने शेड्यूल करने थे आपने क्लासेस और आपने कितने किए. So total number of scheduled classes versus total number of actual classes. So say for a subject, chemistry, you were supposed to take 45 classes and you took 40 classes, you can mention that. If you've taken 45 scheduled and you took 45, you can mention that. Similarly, students' feedback, departmental activities, institute activities, ACR, contribution study, everything is mentioned here. Students are required to answer these 9 questions. All these questions are available. I'll be showing you all of them. We have our apps on the App Store. The teacher app is called Smart Teacher. Student app is called a Smart Student. Teachers and students can download these apps from the App Store. Now, how do we go about implementing the 360-degree feedback? So this I will cover in 3 steps. First is the admin function, then is the student feedback, and then the teacher feedback. The teacher will cover all 3. We will cover how teacher will give, how HOD will give, and how principal will give. Before anything happens, the administrator or the person in charge of the 360-degree feedback has to do a couple of things. First and foremost, what he has to do is activate the institute, then configure the institute. After that, anything and everything can happen. The first step for 360-degree feedback is activate your institute. पहली स्टेप 360 के लिए है कि आपको आपका इंस्टीट्यूट इस पोर्टल पे एक्टिवेट करना है. As 360 administrators, आप जो कोई भी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 360-degree feedback. First and foremost, you will have to activate this. इसके लिए what will be required? You will require your AICT registered email ID and your college's AICT permanent ID. The AICT PID is required. As administrators, you will log into aict360.smartcookie.in. This is where you will log in. Once you log in, you will get this particular screen. Those who want to activate right now as we speak, everybody can go on to this site. Those who are administrators, request you to go there. Click on the Activate College button. Once you click on the Activate College button, you will see this large click to activate. Once you say click to activate, it will ask you to enter your email ID and your school ID, which is your institute ID. Simply enter the two and click on activate.
Once you click on activate, like any other site, you will get terms of condition. Please click on accept. There will be provision for you to update and enter your new password. So you will be entering a new password, re-enter, update. Once you click on update, you will be redirected to the dashboard. You may see all the values blank except for teacher's value, because all the teachers are pre-registered by AICT on the portal. Teachers will only have to log in and put in their departments and subjects that they are teaching. The process is very, very simple. Request all administrators to go ahead and follow this process. We also have an alternative method of activating your college. If you do not have access to the email ID that you are using with AICT, then you can put in your email ID. Once you put in your email ID, it will give you a message that it does not match for activation. Do you want to re-enter or reuse this? You say use this email ID. It will take up your details. It will send an OTP to your email ID and your phone number to this new updated email ID. Click on I confirm that you are the admin in charge. Click on submit. You will get an OTP. Verify the OTP. Put in your new password and you would have activated your institute. The process is as simple as that. This is the first step towards activation. Activation के लिए पहला step है कि आपको आपका इंस्टीट्यूट एक्टिवेट करना जरूरी है इस पोर्टल पे. I see 2 colleges activating themselves today. Just now, one is Government Polytechnic Pratapgarh and Ayojan School of Architecture. Thank you very much for activating. Please take this first step towards activation. Then the next step will come in. Once you have activated, the thing is configuring your institute on the portal. Configuration what? Configuration by organization data. That is the different course levels, degrees, diplomas, branches, class, division, etc. At the organization level information you are going to feed in. The next set of information that you are going to fill in would be the entities master data. Student data that you have. You can upload it yourself or students can self-register themselves. Teachers, faculty are all registered. Those who are missing, you can add them. You can add the non-teaching staff. You can add in the subjects. These are the master set of data. Then there is the mapping data which is used for giving the feedback. Teacher teaching a subject and student studying a subject. Feedback is given by the student for the subject. The teacher also gives in the feedback for the subject he or she is teaching. And the last set of data is the time capsule data, which is the student studying in which semester. This is completely optional now. So how do you go about configuring the system? There are 2 methods of configuring the system. One is by the upload panel, where you would download the Excel sheets, our standard formats, upload them,
back into the system after updating the Excel sheets. And the second method that we have, that you can copy from the DTE standards or your university standards. So I will take you through both of them. मैं आपको दोनों मेथड दिखाऊंगा. पहला मेथड है जहां पे आप एक्सेल शीट्स आप खुद बनाते हो, हमारे साइट पे से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर लोगे एंड उसको भरोगे और फिर अपलोड करोगे सिस्टम में. ऑल्टरनेटिवली हमारे पास मास्टर सेक्शन भी है जहां पे आप 1 by 1 इंफॉर्मेशन भर सकते हो. You can also go to the master section and update 1 by 1. I'll show you the upload panel. In the upload panel, in the data format section, we have all these formats that you can download. The course levels, the degrees, the departments, the branches, class, division, all these can be downloaded as standard format from your existing data set. You can copy paste into these Excel sheets and upload into the platform. In the data upload section, you can select what you would want to upload. You can select the file and upload the file. Just 1 minute, Rakesh sir. These will have to be uploaded probably only once. Once you have created the departments and branches and all that. Every semester, you don't need to upload all this information. The only thing that then you need is the student-teacher subject mapping and then the actual feedback. The standard tables have to be created only once. There also Rakesh sir will show you how we can simplify the process with the help of the group that you belong to. You belong to DTE. All the DTE standards that are available on Rajasthan DTE's website, we have created these standard tables, and all DTE colleges can use those tables by selecting the copy options, which Rakesh sir will show. So, and these, we will be creating access for DTE to make any changes in it if they want. If we get from DTE or any university, if we get university standards, we can upload them for the university. Alternately, we can create the standards from university websites, and then university authorities can make changes to that or confirm that. Go ahead, Rakesh sir. Thank you, sir. So once you have uploaded these, you will be ready for the next stage. The third step, or the alternate method that I was talking about, or what sir also mentioned about DTE university standards. I'm just showing you by an example. Say, you are part of DTE, example being Government Women Polytechnic Ajmer. You want to copy the data set from DTE's website, or DTE's data set you want for yourself. This is applicable to all polytechnic institutes. So you will go on to data copy. Once you are in data copy, you will select from the table name what you would want to copy. So you can copy the different course levels, the degrees, the departments, branches. These are standard codes that are available with DTE. Those can get copied. Just for example, I will just pick up the subject. So when you select the subject from the drop down, you will see from where you would want to copy. You want to copy the Bikaner Technical University standards or technical education standards or Rajasthan Technical University standard. Or then you'll get a whole list of them. I'm selecting Board of Technical Education. So once I select that, it will give me a message, file selected to copy subject. So you want to copy from where to where, and what are the subjects you want to copy. So subject code, subject ID, subject type, everything will come up automatically. You simply select all, or the subjects that are taught in your institute, you can select that and click on copy. As simple a configuration as this it is.
So this is a very simple configuration method. एक बहुत ही सिंपल मेथड हमने बनाया है यहाँ पे फॉर कॉलेजेस दैट आर अंडर डीटी, अंडर यूनिवर्सिटी. हमने अभी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का बनाया है. तो जो कॉलेजेस जिनको डेटा कॉपी करना है ये स्टैंडर्ड्स, व्हेन यू क्लिक ऑन अपलोड पैनल इन डेटा कॉपी, यू कैन सिलेक्ट द टेबल दैट यू वुड वांट टू कॉपी. आपको जो टेबल कॉपी करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो. मैं एग्जांपल के लिए अभी सब्जेक्ट लेता हूं और फिर किस ग्रुप से कॉपी करना है. तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कॉपी करना है. मेरे को लिस्ट आ जाएगी सारे सब्जेक्ट की. मैं क्लिक सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सारे कॉपी कर सकता हूं, या मेरे पास जो मेरे यहाँ सिखाए जाते हैं वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैं कॉपी कर सकता हूं. as simple a procedure for configuration as it can be. हमने उसको वेरी सिंपल कर दिया है. एक बार आपका कॉपी हो गया, आपका बेसिक स्टैंडर्ड सेट तैयार हो गया, तो इसके बाद व्हाट इज रिक्वायर्ड is only student list, student subject and teacher subject. All these three can then be self-reported or self-added by the student or by the teacher. तो स्टूडेंट अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, टीचर अपना डिफाइन कर सकता है कि भाई मैं कौन से डिपार्टमेंट में हूं और मैं क्या पढ़ा रही हूं. तो टीचर सब्जेक्ट मैपिंग, स्टूडेंट सब्जेक्ट मैपिंग कैन बी टेकन इंडिविजुअली. After that, we can send out welcome emails with credentials to teachers and students. For teachers, your first time login is your AICT teacher ID. So if you're going to log in for the first time, you can use your AICT teacher ID to log in. So you can log in by employee ID. Select your AICT teacher ID as the teacher ID. The school ID will be the AICT PID. And your first time password will be your AICT teacher ID only. After which you will be able to reset your password and you will be able to log in. For students, if the administrator has registered them, then the first time password is your student PRN. Once you try to log in for the first time, it will ask you to update your password. Once you have updated your password, you can be logged in. So what does student do? How does student do? Student can download the app from the App Store called a Smart Student. You can go ahead and register yourself by email ID or by mobile number. An OTP will come. Once you have verified your OTP, then you can fill in your details. You can validate your college ID and register. Once you have registered, successfully message will come up on your screen. And after you log in, you will see is the 360-degree feedback button on your screen. You have to click on the 360-degree feedback button. Select the teacher for which you are giving the feedback. The academic year by default will come to you. Say 2020-2021, you are giving the feedback. If you have mapped in the subjects that you are studying and a teacher is mapped to it, you will see all the details. You will then know which you will get the set of questions. You can give 1 to 5 star ratings
for each of the questions. Once you have given the star rating, you can submit. Now, if the teacher has not defined the subject that he or she teaches, the student can select the teacher, tap on the academic year. He will get the list of all the subjects that are taught in the institute. He can select the subject, give the star rating. Now, if he doesn't see the subject, he can manually add the subjects only for 360-degree feedback. He can only do this for 360-degree feedback. This has no relevance on the subject list on the school list. It is only for his feedback for the subject. Rakesh sir, 1 minute. I think this is like the last resort to get 360-degree feedback in. But ideal thing is to avoid this. Ideal thing is to make sure that the standard subject list is already in the system. And in case of DTEs, like I said, हमने राजस्थान के DTE के पोर्टल से सारी सब्जेक्ट लिस्ट ऐड कर दी है. So 99% everything should be there. For universities, maybe there are university-wise different subject lists, and those also we will put. So the goal for everybody that is on this call is to make sure that the standard tables are created, and we are there to help you. So any college, any university that needs help, please approach us. We have a separate presentation for the coordinators. In fact, this whole meeting is supposed to be for the coordinators, not so much for the students. Students के लिए अलग से training session किया जाएगा. Like I said to you, दिन में 2 बार हम training session करते हैं, सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे. And you can arrange, you meaning all the coordinators from various colleges that are here, can either arrange a special training for your students, or you can join the general training that happens twice a day and learn the process, ask questions, get your difficulties solved. But customized, personalized, individualized training is available for each college. तो ये जो प्रोविजन राकेश सर ने अभी बताई है 360 फीडबैक की, the idea was कि टीचर डेटा देने के लिए रेडी है, स्टूडेंट्स रेडी है, लेकिन सिस्टम में कोई सब्जेक्ट मिसिंग है तो ऐसा कर सकते हैं. But the problem in putting the subject here without a standard code is कि उसका स्पेलिंग अलग होता है. कोई मैथमेटिक्स करेगा, कोई मैथ्स करेगा, कोई कंप्यूटर साइंस लिखेगा, कोई कॉम साइंस लिखेगा, कोई CS लिखेगा. सो समरी टोटल्स ठीक से नहीं आती है कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए. So that's why my request is, let's try to avoid this entry here. Back to you, Rakesh sir. Yes, sir. ये सारे प्रश्न स्टूडेंट आंसर करता है. These are the 9 questions that every student answers. These are fixed currently. All across the country, every student answers these questions. Each of these questions carry 1 to 5 points. 1 से 5 पॉइंट का हर प्रश्न का उत्तर है. स्टूडेंट इसको आंसर करता है. Next is what we will see now is how the teacher, HOD and the principal gives the feedback. Based on the position that the teacher is. Teacher can be a teacher as a faculty or an HOD or a principal. Now as teacher, you will get only 2 options: teaching process and contribution to society. As HOD, you will get 1 additional option: departmental activities, which are used to enter for other teachers. And as principal, you will get all the options where you can add in institute level activities and ACR. अब जहां जहां प्रिंसिपल HOD का भी काम करता है, अगर प्रिंसिपल HOD का काम भी करता है, उसको डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज करनी है तो वो कर सकता है. यहां ऑप्शन में अवेलेबल है, सारे ऑप्शंस ओपन है, सारे एंट्री कर सकता है. सो कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी क्या है?
or what is contribution to society. Each of these activities carry anywhere between 1 and 5 points. टोटल 10 पॉइंट है, इसमें से हर एक्टिविटी के लिए आपको 1 से 5 पॉइंट है. आप अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हो. एक्टिविटीज लाइक ब्लड डोनेशन, योगा क्लासेस, इलेक्शन ड्यूटी, आपने कोई मेडिकल कैंप किया, ब्लड डोनेशन ड्राइव था, मेडिकल कैंप किया, हेल्थ कैंप किया, ट्री प्लांटेशन, स्वच्छ भारत मिशन, उन्नत भारत मिशन, एनएसएस, किसी भी प्रोग्राम में जहां पे टुवर्ड्स द सोसाइटी है, ओके, कॉलेज के बाहर की एक्टिविटीज की है, उनको सारा यहां ऐड किया जा सकता है. ये 9 सैंपल है, इसके अलावा बहुत कुछ भी आप डाल सकते हो. Additional options are available, additional activities can be added. These are some 9 standard defaults that we have provided. Now for departmental activities. So what are departmental activities? Any activity done by the faculty for the department, okay, will come under departmental activities. If that activity is done for the whole institute, then it will come under institute activities. So same activity sometimes may fall under both the categories. So you've been made lab in charge, is a departmental activity. Okay. You did student counseling, can be departmental activity or could be institute activities. So depending on the type of activity, each of them will carry 1 to 3 points. So total of 20 marks are there, which an HOD will say that this teacher has done these activities. Industrial visit, guest lecture, student registration, becoming a cleanliness in charge, taking initiatives for organizing MOOC lectures. So any of these activities that are at departmental level can be added. These 23 we've given standard. More can be added. Similarly, at institute level activities, each of them carry 1 to 4 points. So somebody being made an HOD is an institute activity. Somebody being an AICT University DT, AISHE in charge or RUSA in charge, TQIP in charge, all that will carry points here, and this can be added here. Additional activities, sample 20 we've provided, more can be added. हमने ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया है जहां हमने 9 कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, 23 डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज एंड 20 इंस्टीट्यूट एक्टिविटीज लिख के दिए हैं. इसके अलावा भी अगर आपके इंस्टीट्यूट में है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. फॉर दिस वी हैव द टीचर ऐप. You as teachers can download the Smart Teacher app from the App Store. You will see the Einstein logo there when you click on Smart Teacher. Once you have downloaded, you can log in with your email ID or with your employee ID. Once you have logged in, you will come to the dashboard. On your top right corner, you will see is the AICTE feedback. Based on the position you are, you will see 2 menus, 3, 4, 5 menus you will see. So once you tap on teaching process, you will see the subjects that you are teaching. If these are pre-filled by the administrator, you will see them here. If not, you can go on to the menu and add subjects. Add your subjects that these are subjects I am teaching. Then you will see the list of them here. Once you select the subject, you are going to say how many scheduled classes were there and how many actually you conducted. This is the activity you can do for every semester
that these are the subjects you are teaching and these are the teaching process details. Next would be your contribution to society for the semester, for the activity that you are doing. You can mention whatever activities you have done. Say you've taken part in the Swachh Bharat mission. You can mention that and submit that. And if you are if you're logged in as an HOD, you can select the different activities and submit the data. This goes for your teacher application. Just a reminder again, for administrator, you can go to aict360.smartcookie.in. For those who we generally encourage everybody to use the apps. But if you would want to use the PC, you can go to aict360.smartcookie.in. From there also you can log in as teacher and student and give in the feedback. All our previous webinars and this webinar also will be available on the Media AICT's website, on the Media AICT video channel, on YouTube channel. If you go and search for Media AICT, in that all the 360-degree feedback webinars are there. They are all available for your viewing. For all your queries, we have a dedicated email ID, fdc360degree@aict-india.org. For all your implementation queries, if you have any query, you can always write to us at fdc360degree@aict-india.org. We will give you a link saying that you can join in this particular session. It could be a special session for you or a general session which you can attend and get your problems resolved. Now we'll talk about what is beyond 360. हम अब बात करेंगे कि एक बार आपने 360 डिग्री दिया या आपको 360 आपने एनरोल कर लिया, तो उसके बाद जो 360 के एडिशनल बेनिफिट्स है, उसके बाद क्या है, उसका हम आपको एक छोटा प्रीव्यू देंगे. We'll tell you what the next steps are or beyond 360. We have this program which is the Protsahan Mudra program. So here in this 360-degree framework will be used and we'll be expanding it. Here you saw rewarding for the teacher or feedback for the teacher. Now we will look at rewarding non-teaching staff, rewarding and encouraging students, different AICTE FDC initiatives, and different sponsors and different rewards. So this is the expansion of 360-degree feedback. What is the current method of evaluation of students and teachers? We examine them, we evaluate them, we rank them, we reward top 3 or top 10. This activity we do once every semester or once every year. So this typically we do every semester or every year. What we plan to do in the new method is to understand the knowledge, the skill, and the interest of every student, teacher, and non-teacher, non-teaching staff. Encourage 100% of them, those who are active. Give them real-time encouragement and create new events for the inactive students, teachers, and non-teaching staff. Try to identify the areas of interest and give them new events. So this is the new method.
तो what is smart cookie? So we spoke about all this. What is smart cookie? Smart cookie is the international name. For India, we are also calling it Protsan Bharati. This is a student-teacher reward program. It is a process of providing just-in-time rewards for every student and teacher. So, Protsan Mudra are the points that are earned by students and teachers, which will be used on our rewards fulfillment program platform. So our platform is www.smartcookie.in. स्मार्ट कुकी ये हमारा इंटरनेशनल नेम है. इंडिया स्पेसिफिक के लिए हमने उसको प्रोत्साहन भारती भी कहा है. प्रोत्साहन भारती एक स्टूडेंट टीचर रिवॉर्ड प्रोग्राम है. ये 360 के अलावा का है, ये 360 के बाद का है, जहां हम हर चीज जो स्टूडेंट करता है उसको इन टाइम हम रिवॉर्ड करते हैं. इसके लिए हमारे पास होल सेट ऑफ कंपेनियन प्रोडक्ट्स है. और हमारा ये सिस्टम क्या है, इसका एक छोटा सा वीडियो है कि इसमें AICT कैसे पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हम इसको ये कैसे लाइवली बनाएंगे, हाउ वी विल मेक दिस स्मार्ट कुकी प्लेटफॉर्म फन, एंगेजमेंट, how we'll create a community of motivated students and happy teachers. स्मार्ट कुकी ये कैसे करेगा? We'll give real time recognition, पॉइंट्स देंगे, बैजेस देंगे, सर्टिफिकेट्स देंगे, रिकग्निशन देंगे. कैंपस रेडियो, कैंपस टीवी, हमारे ये 2 प्रोडक्ट्स है. उसके ऊपर ये चलता कैसे है, हाउ डज दिस वर्क? हम ये पॉइंट्स AICT के द्वारा आपके इंस्टीट्यूट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वो आगे टीचर और स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर रिवॉर्डिंग एंड थैंकिंग ईच अदर. तो स्टूडेंट को रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? टीचर हर स्टूडेंट को हर एक्टिविटी के लिए, अटेंडेंस के लिए, क्लासरूम एक्टिविटी के, इंटर्नशिप के लिए, एग्जाम के लिए रिवॉर्ड करेगा. इस रिवॉर्ड को वो स्टूडेंट कूपन बनाएगा और उसको रिडीम करेगा. सिमिलरली स्टूडेंट टीचर को थैंक यू कहेगा. स्टूडेंट टीचर को रिवॉर्ड नहीं कर सकता, उसको थैंक यू कहेगा. मेंटोरिंग करने के लिए, मोटिवेशनिंग करने के लिए, सपोर्टिव होने के लिए टीचर अपना कूपन भी बना सकता है, रिडीम कर सकता है. एडिशनली सोशल मीडिया पे उसका रिकग्निशन मिलेगा. और ये सारा हमारे 2 ऐप्स के द्वारा होता है, स्मार्ट स्टूडेंट एंड स्मार्ट टीचर के थ्रू. हम एक सिस्टम है, हमारा एक इकोसिस्टम है जहां इंकरेजमेंट दिया जाता है. इसको हम गेमिफाई करते हैं. आगे स्पॉन्सर्स, पेरेंट्स आता है जो इन गेमिफाइड रिवॉर्ड्स को स्पॉन्सर करेगा इन दिस सिस्टम. हमारे पास एक कंपेनियन प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल सेट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल फॉर ऑल इंस्टीट्यूट्स. स्मार्ट कुकी जिसके बारे में हमने अभी बात करी, वी हैव इज अ रेडियो प्लेटफॉर्म एंड अ टीवी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट रेडियो, इंटरनेट टीवी प्लेटफॉर्म, कैंपस रेडियो, कैंपस टीवी. स्टार्टअप वर्ल्ड हमारे पास है, जो हमारा इंटर्नशिप्स है. हम AICT का इंटर्नशिप पोर्टल से इंटर्न्स लेके जो हमारे पास एनरोल करते हैं, हम उन्हें स्टार्टअप वर्ल्ड में एनरोल करवाते हैं. वहां से हम उनका सारा इंटर्नशिप एक्टिविटी ट्रैकिंग करते हैं प्रोजेक्ट शोकेस के द्वारा. एडिशनल प्रोडक्ट्स जो हम बनाना चाहते हैं, एथिकल HR, जॉब सितारा हमारे पास ऑलरेडी है. मिनी शार्क टैंक एक माइक्रो इन्वेस्टमेंट पोर्टल के जैसा, एलुमिनाई कनेक्ट, NRI OCI कनेक्ट, लर्निंग प्लैनेट एक कंप्लीट न्यू अप्रोच फॉर ई लर्निंग. ये सारे कंपेनियन प्रोडक्ट्स हर एक इंस्टीट्यूट के लिए अवेलेबल है.
हमारा जो एमओयू हुआ है एआईसीटी के साथ, इसमें सारा मेंशन्ड है कि हम क्या क्या इंस्टीट्यूट के साथ कर सकते हैं। एक छोटा सा स्नैपशॉट है कि हमने अभी तक पिछले साल में क्या क्या किया है। हमारे जो 2-3 राउंड हो चुके हैं थ्रू आउट द कंट्री, 9,500 प्लस कॉलेजेस है, 4,500 प्लस कॉलेज को हमने प्रेजेंटेशन दिया है। अबाउट 2,000 कॉलेजेस एक्टिवेटेड है, 5 लाख स्टूडेंट, 5 लाख टीचर्स है, 4 लाख स्टूडेंट्स आए हैं। राजस्थान का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 1,500 ही था, तो इस बार भी एक्सपेक्ट कि और ज़्यादा ऐड हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स राजस्थान से आ जाएंगे। सो इस जो इंफॉर्मेशन आएगी अभी टीचिंग प्रोसेस से, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, इंस्टीट्यूट एक्टिव, स्टूडेंट फीडबैक से, इस बेसिस के ऊपर से सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे टीचर्स को। डेटा क्वालिटी एक्सीलेंस ऑफ अ टीचर, स्टूडेंट फेवरेट, मोटिवेटर है, ग्रीन गुरु है, स्टार्टअप हीरो है, ये वैरायटी ऑफ सर्टिफिकेट हर टीचर को दी जाएगी। दिस इज वन ऑफ द वेरियस सर्टिफिकेशन दैट एवरी टीचर विल गेट। So what we want to ensure that every teacher gets rewarded for their contribution. So अगर टीचर किसी को स्टार्टअप में गाइड करता है, कोई पेटेंट फाइलिंग में गाइड करता है, कोई रेवेन्यू मॉडल बनाता है, कोई स्पोर्ट्स के लिए इंकरेजमेंट करता है, ये सारों को यहाँ पे रिवॉर्ड किया जाएगा। What we spoke about the different initiatives of FDC, अलग अलग जो एआईसीटी की एफडीसी है के प्रोग्राम्स हैं, उन सारों में एआईसीटी का ये 360 डिग्री फीडबैक का पार्टिसिपेशन होगा। रिवॉर्ड्स कहां से दिए जाएंगे, कहां क्या कैलकुलेट किया जाएगा, ये 360 विल फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल दिस। Then we have variety of sponsors and rewards for every student and teacher, especially for students एंड टीचर्स। जो हम बात करते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन, स्टूडेंट सेमिनार्स, टीचर ट्रेनिंग, क्रॉस बॉर्डर स्टार्टअप्स, इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स और यूएस के कोई स्टूडेंट्स, या यूके के कोई स्टूडेंट्स, जापान के कोई स्टूडेंट्स, ऐसे कोलैबोरेट करके स्टार्टअप्स तैयार करेंगे। फिर ये जो पॉइंट्स मिलेंगे, ये हम ई लर्निंग वेंडर्स के साथ इसको डिस्काउंट करवाएंगे, बुक पब्लिशर के पास डिस्काउंट करवाएंगे, इवेंट्स में डिस्काउंट मिलेगा, ट्रैवल में डिस्काउंट मिलेगा। वी विल टाई अप विद वैरायटी ऑफ फूड स्पॉन्सर्स, आपको कॉफी, टी, इंडियन स्नैक्स, आइसक्रीम, इस चीज में आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको फुटवेयर पे, क्लोथिंग पे, कपड़े में आपको डिस्काउंट मिल सकता है। सो ये सारे जो डिस्काउंटिंग के रिवॉर्ड्स है, दिस इज ऑल द एक्सपांशन ऑफ 360 degree feedback. You'll get all these benefits once you activate yourself and once you have given the data for students and teachers on the portal. हमारा रिवॉर्ड का फुलफिलमेंट प्रोग्राम है। Rakesh sir, go back for a minute. I Yes, want sir. to talk about specifically Japan. तो जापान के साथ what we are planning is कि जापान में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इज कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट वी हैव इन यूएस। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पैसा है, उनके पास प्रोजेक्ट है जिन पे काम करने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं है। ये जो अपनी यंग स्टूडेंट की पॉपुलेशन है, यंग टीचर्स की पॉपुलेशन है, इनको वो चाहते हैं कि जापानीज इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट पे वो काम करें। उसके लिए वन ऑफ द रोड ब्लॉक्स इज द जापानीज लैंग्वेज इटसेल्फ। तो हमने इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नो बीन ट्रेन्ड इन जापानीज। देयर आर कॉलेजेस हु स्पेशलाइज in Japanese, especially in Pune.
there is a university, Tilak Maharashtra Vidyapit. They have been teaching Japanese for a long time. तो हम उनके साथ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट स्टूडेंट्स आपको लगते हैं आपके कॉलेज में से, जो चाहते हैं कि जापान में जाएं, तो वो अगर जापानीज सीखे इस प्रोग्राम से, टेक्नोलॉजी तो आप सिखा ही रहे हो, तो दे विल बी प्रेजेंटेड टू द जापानीज इंडस्ट्री, और इसके साथ जापानीज कॉलेजेस आर आल्सो गेटिंग कनेक्टेड. So whether to do for startup like Rakesh sir was saying, hackathons or whatever, or plain simple internships with Japanese industry. तो इस तरह के काफी सारे प्रोग्राम है, सारे आपको ये 360 के बेसिस पे डेटा बन रहा है. दिस इज द डेटा फ्रेमवर्क, जिसमें एक जगह पे इंफॉर्मेशन रहेगी कि कौन सा स्टूडेंट किस टीचर के अंडर क्या सब्जेक्ट सीख रहा है. दैट डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट to offer the right opportunities to the students as well as teachers. So that is why it's very very important. इसलिए यहाँ पर employer sponsorship लिखा है, incubator accelerators लिखा है, different government agencies लिखा है. So all these things will be facilitated through this portal. So don't look at this portal as something that is only for collecting your data on what you have done. It is part of the government's regulatory process, but it's also meant for providing these encouragement and opportunities to both students and teachers. Back to you, Rakesh sir. Thank you, sir. As I was saying that on our rewarding platform, we have our rewarding platform, rewardingnation.com, where the products will be put and this can be offered at discounts. आपको जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो यहाँ पे आपके पॉइंट डिस्काउंट होंगे, जस्ट एज अ सैंपल. एंड आपको ये जो रिकग्निशन मिलेगा, जो कैलकुलेट होगा, ये आपको AICT के वेबसाइट पे, स्मार्ट कुकी के वेबसाइट पे, कैंपस रेडियो, कैंपस टीवी पे, यहाँ सब जगह पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा. टॉप 100 IT इंचार्जेस, 100 डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, 100 TPOs, टॉप 100 कॉलेजेस, ये सारा कुछ का इंफॉर्मेशन AICT की वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट पे एंड सोशल मीडिया पे अनाउंस किया जाएगा. और एक कैंपस रेडियो, कैंपस टीवी का जो सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म है, ये सारे कॉलेजेस को हम AICT के थ्रू ऑफर कर रहे हैं. So the software license itself is free. So those of you who are interested in running, और जिनके यहाँ पे enthusiastic students या फैकल्टी है, वो इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे कैंपस टीवी पे हम भी एक प्लेसमेंट टीवी शुरू करने वाले हैं, और पूना में एक यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाइप चल रहा है. वहाँ के 1000 कॉलेज में ये प्लेसमेंट टीवी लॉन्च हो जाएगा. और जहाँ जहाँ पे इनोवेशन सेंटर्स है AICT के, वहाँ पे इनोवेशन टीवी भी शुरू हो सकता है. तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको इस 360 के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है. बैक टू यू राकेश सर. इसके अलावा जैसे एक सैंपल है ये कि आपका कैंपस टीवी कैसे दिखता है. ये हमारे पास इसका ऐप भी है और इसका वेब भी है. आप वेबसाइट पे भी सुन सकते हो और ऐप पे भी सुन सकते हो. इसके अलावा हम सातों दिन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के साथ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, जिसको हम वंडरफुल डेज बोलते हैं. मंडे को बिजनेस मंडे करते हैं, ट्यूसडे को टीचर्स ट्यूसडे करते हैं, वेडनेसडे को वुमेन्स वेडनेसडे, टीमिंग थर्सडे, फ्राइडे को फिनटेक हो, फार्म टेक हो, फैशन फ्राइडे हो, ऐसे ऐसे 3 अलग अलग चलाते हैं. सैटरडे को हम स्टार्टअप सैटरडे एंड संडे को इनोवेशन संडे एज प्रोग्राम रन करते हैं. ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल टीचर्स आर वेलकम फॉर दीज प्रोग्राम्स. वी विल सेंड यू द लिंक्स आउट कि आपको ये कैसे ज्वाइन कर सकते हो ये सारे प्रोग्राम्स, and you can join in any of these programs. We also have
International internships, like Avi sir said, talked about Japan. But international internships and projects are also available. We also would like to partner with different colleges in the evaluation of interest, starting some incubation centers in colleges that want to do that. We can plan some revenue shares and different possibilities of revenue shares with faculty, with college, with students. We can do all these possibilities with Protsahan Mudra. We have an excellent portal or that we are planning to launch, which is called as Ethical HR. This would be like a civil-like score that is basically for ethics, for student ethics. इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट एथिक्स का? स्टूडेंट अगर कहता है कि मैं कोई इंटरव्यू के लिए जाऊंगा तो वो जाएगा, अगर नहीं जाने वाला है तो रिपोर्ट करेगा कि मैं नहीं जाने वाला हूं, आपके मेरे को आप पसंद नहीं हो, मैं आपके इंटरव्यू के लिए नहीं आ रहा हूं. या अगर इंटरव्यू के जाता भी है, सिलेक्ट होता है और अगर उसको नहीं ज्वाइन करना है तो वो कहेगा कि नहीं ज्वाइन करना है, गायब नहीं हो जाएगा. बहुत टाइम पे क्या होता है कि स्टूडेंट कहता है कि मैं ज्वाइन करूंगा, फिर ज्वाइन नहीं करता है. तो ये सब चीज के लिए स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि भाई आप रिपोर्ट करो. तो इस रिपोर्टिंग के लिए हम ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि एथिकल एचआर. जैसे फाइनेंस के लिए हमारे पास सिविल स्कोर है, वैसे कॉर्पोरेट में और स्कूल्स के लिए हम लोग ये एथिकल एचआर स्कोर ये लाने का हमारा प्रपोजल है. जैसे हमने कहा बहुत सारे और एप्लीकेशन एरियाज है, स्टूडेंट ओरिएंटेशन, फैकल्टी ओरिएंटेशन, ब्लॉकचेन ऑफ रिवॉर्ड्स, alumni connect, NRI OCI connect, academy industry connect, ये सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म से पॉसिबल होगा. तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्लॉकचेन के लिए we can look at colleges that want to participate in blockchain courses or want to become node on blockchain. We'll talk separately on how blockchain can be used in your institute. So far, we've done a lot of felicitation with AICT. Felicitation certificates have been awarded to a variety of institutes. First 25, first 150, 169. Those that initiated a student engagement. All these we've given certificates. More certificates will be provided to all institutes that participate in this program. We highly encourage you telling your students to apply for internships on AICT's Internship Portal. The portal is internship.aict-india.org. Students once registered there can also register on our portal, www.startupworld.in. These are two websites we highly encourage all students to use. Once again, just to remind you, smart teacher, smart student, and those who want to use the web, aict360.smartcookie.in. We'll take up some questions from your chat box. We have another 5-10 minutes. We'll take up some of your questions. If you have any questions, we'll take them up. Remember again, for all your queries, you can write to us anytime on fdc360degree@aict-india.org.
Let us look at some questions that have come up. There's one college from Government Polytechnic, Bharatpur, that you have uploaded. Can you delete and choose data copy? If you have added, you need not delete it. Whatever you have whatever you have not added, you can do a data copy from DT. There is one that I don't have teacher ID. Teacher IDs are provided by AICT. If you have registered on AICT's portal, you will have the AICT teacher ID. If not, then you can have your administrator register you as a teacher, and you can use your internal teacher ID. There's one question that the 360 was not adopted in all institutes, and will it be implemented from 20 to 23? Our process is that this is an ongoing process. We are requesting all the institutes to start implementing the 360-degree feedback. As Colonel Venkat also said, that in future, all your finances and all your approvals will be based on the 360-degree feedback, whether your college has implemented 360 or not. So this will become mandatory, and this is mandatory. So yes, even for 20 to 23, yes, people will go ahead and start implementing. I think Rishi Vyas had asked a question, Rakesh, about bulk delete if they have made any mistake. Sir, what I would request you is that approach us on one of the support sessions, morning 10 a.m. or evening 4 p.m. And we can create a special one-on-one session with you, look at exactly what has gone wrong, and figure out a way to help you. Rakesh sir, in terms of if there are any people from DT or university, Nobody is maybe there. University people were there, no? No, zero. Then it is for the colleges to see if a university standard can be used. If any college in that university can take the lead and has been using university standards, we can make those available to other colleges. So like we said, a college DT से यूनिवर्सिटी से स्टैंडर्ड फाइल कॉपी कर सकता है, उसी तरह एक कॉलेज दूसरे किसी कॉलेज से भी कॉपी कर सकता है. तो जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट लिस्ट है, स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट लिस्ट है, तो कोई भी अगर यूनिवर्सिटी एक मेंटोर कोई भी कॉलेज अगर मेंटोर कॉलेज बनना चाहता है उनकी यूनिवर्सिटी के लिए या ग्रुप डीटी के लिए, तो प्लीज अप्रोच अस. We'll show you how you can do that. And we do have a program of giving certifications or award जो लोगों को डीटी या यूनिवर्सिटी की स्टैंडर्ड्स है वो इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे. तो कैंपस एम्बेसडर या कैंपस मेंटोर, ये दोनों के लिए सर्टिफिकेट मिलेंगे एआईसीटी की तरफ से और हमारी तरफ से.
there is a good suggestion कि फीडबैक क्वेश्चन स्टूडेंट्स हिंदी में भी होने चाहिए. We will discuss that internally. Currently all the questions are in English. सारे क्वेश्चन अभी इंग्लिश में है, बट आपका सजेशन लिया जाएगा. विल सी क्या कर सकते हैं. ये जो GR इशू हुआ था 2019 में, उसको हम फॉलो कर रहे हैं. और आपके जो सजेशन है, आप AICT का जो राकेश सर ने ईमेल एड्रेस शेयर किया था, उस पर भेज दीजिए प्लीज़. So, before we close, one final question as to how satisfied were you with this webinar? Rakesh, you can also ask question if which colleges would like to do something in blockchain. You have that? स्पेशली अगर किसी को इस प्रेजेंटेशन में कोई त्रुटि लगती है, तो प्लीज़ गिव अस फीडबैक कि इसमें और क्या ऐड करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए. आई थिंक ये कभी किसी का फीडबैक आया था कि उन्हें कोई इसमें कमी दिखी. प्लीज़, दैट्स अ वेरी गुड फीडबैक. LC Bishnoi sir wants the mic. That is controlled by AICT. कोई AICT की तरफ से क्या माइक ऑन कर सकते हैं? सर, हम हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हाँ, प्लीज़ इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स. राजवीर सर, आप प्लीज़ आपके स्टूडेंट को इनवाइट करें और हमें बोलिए कब अवेलेबल है वो. We'll be more than happy to make presentation and training for the students. Nivetha and Rakesh, can you Yes, sir. please put your contact details? So, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, बाद में भी अगर आप अप्रोच करना चाहते हो, तो हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हम चैट में डाल रहे हैं. फील फ्री टू रीच आउट टू अस. निवेता, प्लीज पुट एवरीबॉडीज कांटेक्ट डिटेल्स. मी, राकेश सर. Yes, sir. ये हमारे कांटेक्ट डिटेल्स है. फाइनल पोल आपके स्क्रीन पे. ऑलमोस्ट इन टाइम. ऑलमोस्ट रनिंग आउट. आपके कांटेक्ट डिटेल अगर आप डालेंगे चैट में, तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे. We have one more college activating. International School of Informatics and Management, Jaipur. Congratulations.
request all colleges to again go ahead and activate your colleges. Take the first step towards the 360-degree. If you have any trouble, do write to us on fdc360degree@aict-india.org. Do write to us also what improvements do you want in the presentation. सीमा चौधरी मैम, आप उस पोर्टल पे जाके अगर आपका परमानेंट आईडी डालेंगी कॉलेज का, तो सिस्टम विल टेल यू वेदर द इंस्टीट्यूट इज एक्टिवेटेड और नॉट. Yeah. Thank you once again. Thank you everybody. We are almost out of time.